गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी हम लोग हैं 18th पावर ऑन में हैदराबाद में। ये इस फेयर का डे 1 है 10th ऑफ जनवरी। आज अभी हम लोग हैं यूनिक के स्टॉल पे, जो कि पुणे बेस्ड कंपनी है, और मेरे साथ यहाँ पर इस जनरेशन से 2 लोग ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, और ये जो इंडस्ट्री रन कर रहे हैं ये पिछले 3 जनरेशन से इस इंडस्ट्री को रन कर रहे हैं। बहुत अप्रिशिएटेबल जो बात यहाँ पर देखने को मिलती है वो ये कि एक जनरेशन, अमूमन लोग जो इस काम को करने वाले हैं 1 या 2 जनरेशन में, पर यहाँ आप देख पा रहे हैं 3 जनरेशन से काम रेगुलरली ये परिवार कर रहा है। जानते हैं राजेश जी से इस पूरी जर्नी के बारे में, और क्या चीज वो यहाँ, क्या प्रोडक्ट वो यहाँ शोकेस कर रहे हैं, और क्या फ्यूचर गोल्स उस कंपनी के हैं, वो अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे राजेश जी। प्लीज सर। Good afternoon, everyone. I'm Rajesh Kailat, the Managing Director of Unik Techno Systems, Unik Batteries. Basically, we are, like Gaurav ji ne bataya, we are in this industry for more than last 50 years, spanning over 3 generations, and we started with manufacturing machines for the battery industry because machines were being imported from abroad, and there was a dying need here for Indian made machinery, because when the battery industry started from an automotive industry and it went to tubular batteries, that is when the requirement of equipments was generated. And when it started, see, it's like this, it's either the egg or the chicken, so they always say. So when the requirement is there, that's when somebody puts up a factory. That's how we actually got into this. And we are actually, there's a mall concept now. So basically what has happened is, earlier you used to be in one kind of an industry, but now what has happened is we are a kind of a one-stop shop. So we give equipments to the battery industry as well as batteries. Design a machine and use in the same industry. Absolutely. So basically what we are doing is, these are kind of bespoke machinery. So what we do is, we understand the customer's need and then we design the machinery accordingly. Whereas earlier it was like one shirt fits all. So there was a certain machinery that somebody used to give, and they used to say, "Aap ye le lena, you buy this machinery." But today what we do is, we cater to the small, medium as well as the large industries. So we customize the machine according to the needs of the industry. So that's what we're talking about, the equipment part. And equipments are such that they have also, we've been upgrading our equipments, and many a time we find that we are making our own machines obsolete. So इंडस्ट्री को आज जिस तरीके से आप देख रहे हो, क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि ग्रो कर रहा है या कुछ सैचुरेट हो रहा है? क्या आपका विजन क्या है? सर जी, इसमें कैसा होता है कि जैसे आप इट्स एक्चुअली काइंड ऑफ एक नजरिया होता है. इट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू दैट यू फील दैट नाउ द इंडस्ट्री हैज गॉन डाउन. That actually inspires us to innovate. So we always take that as an opportunity. So we are in business, right? There are always going to be highs and lows. So we find that when there is a high, we are manufacturing the machinery and selling them. But when there is a low or a slack period, that is when we get into our R&D mode. And we always actually look at both as a positive note. I never say, अरे मेरे पास काम कम है. मैं बोलता है वो टाइम में मैं और क्या कर सकता हूँ, so that I am ready for whenever. Vision. Absolutely. So it's always with positivity that I would not say, we are like, I'm not in a position that I would say I would advise, but I would recommend to my fellow people in the battery industry that whenever there is a slackness in the industry, don't get disheartened. That is the time when you should innovate, and that is when major innovations are born. रन कर रहे हैं तो कोई एक छोटा सा कॉर्नर R&D के लिए बचा के रखिए, ताकि आपके उस टाइम में आप यूज कर सकें. Absolutely. That is what we आते हैं पॉइंट पे कि आप यहाँ शोकेस क्या कर रहे हैं. So here we are showcasing our machines as well as our batteries. So Unik has always been in the forefront of industrial batteries. हमारा सेल मोस्टली B2B होता है, B2C नहीं होता है. It goes into industries and power stations, nuclear power corporations. So we sell to all. We are selling mainly in the field of industrial batteries. Right. So like you would say, automotive battery is one segment, inverter battery is one segment. We are in the industrial battery segment. And Unik is proud to say that today, equipments as well as batteries together, we are exporting to around 30 countries around the globe. And when we talk about 3 generations,
normally people would say there is only a legacy handed over 3 generations. We look at ourselves as a technology company, and we are 3 generations of engineers. Like my dad was a mechanical engineer, I myself a mechanical engineer, and our next generation is also educated technically. And it's only that those times there was only engineering or technical which was valued, but now with the new advent of what we find. So basically, what we are doing in both the segments are, we are in a segment where we are not manufacturing in mass. Basically, quantity does not interest us as much as it's a very kind of a niche segment that we are in both the fields that we have combined together. मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि सर की नेक्स्ट जनरेशन भी इस इंडस्ट्री को फॉलो कर रही है, और केवल इसलिए नहीं कि उनको एक पेरेंटल चीज मिल रही है। अगर आप इंटरेस्ट किसी इंडस्ट्री में जनरेट करते हो और उसके लिए कुछ नया कर पाते हो, तो ये चीजें रिमार्केबल है। यदि आपके परिवार में, आपकी फैमिली में कोई भी बच्चा नया इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करता है, तो उसको अप्रिशिएट कीजिए, ऐसे इवेंट्स पे लेके आइए और उनको वहाँ पर उस माहौल में ढूंढें। ये इंटरव्यू अगर आपको अच्छा लगा हो और इस यूनिक परिवार के बारे में, यूनिक फैमिली के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन से कंप्लीट कैटलॉग एज वेल एज उनका नंबर, जो भी इसका सेल्स पर्सन का नंबर हो वो आपको मिलेगा। वहाँ से आप इनसे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनली विजिट करना चाहते हो 10, 11 और 12 जनवरी में हैदराबाद में, आप पर्सनली आकर विजिट कर सकते हैं और अपनी फ्यूचर की जो इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको लाइन अप करें। मिलेंगे जल्दी ही अगले स्टॉल को। तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।